I'd like to move on to the conference keynote, which is on retail resilience, robust future of the brick-and-mortar store in the age of payment, techs, and new business strategies. May I please invite the chairman of the Pakistan Fintech Network, Mr. Nadeem Hussain. Nadeem sir. Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. It's my singular pleasure to be here and be presenting this keynote. I'll take about 15 minutes of your time and share my thoughts with you as to what's happening on the macro level, and then come down to the retail level. And at the retail level, I'll take the lens of the smaller stores, the Kiryana stores, as opposed to the modern trade. And a lot of that I'm going to talk about what's happening at that level is applicable to modern trade, but to the smaller stores. Pakistan is going through a slow shift towards digitalization. And I say it's a slow shift because we're a country of 220 million people. We're essentially a cash society. Right now, we have about 7.6 trillion rupees circulating, which have been printed but are not in any bank account. That's about 20% of the money in circulation, one of the highest in the world. And to move a cash society to a digital society, as China was able to do and some other countries are doing, needs strategic direction, but most important, needs relevance for the people that you're trying to convert to cash to digital. And that's one of the challenges you'll see as we move forward. On the other hand, we have many positive things working for us. We are one of the few countries in the world which have an identity network for every citizen of Pakistan. Nadra, actually, when you start looking at it, and you'll be wondering what's the relevance for you. The relevance is that your customers, which you develop, whether you're a small retail store or a mall or a large store, if you're looking for identification, if you're looking for loyalty programs, you first need to identify your customer. And that exists. Pakistan now has more than 55 million smartphones. And smartphones are revolutionary. Through a smartphone, for example, I'm going to give you some analogies which I'll bring back to retail, is you now have telemedicine. A person sitting in a remote part of Pakistan can now get a diagnostic from a doctor sitting actually in the city, which they previously couldn't do. That's because smartphones exist. That actually telemedicine can also be made available through a feature phone because our GPS coverage is close to 90% in the country. These are railroads which you need to figure out how you're going to leverage. The ability to do identification for more than 110 to 120 million customers. And if you're in this business, then payments is something which is going to be near and dear to your heart because you don't always want to accept cash. With the introduction of RAST, which is a state bank payment process, which will allow you as merchants to both push and pull money under 15 seconds. You could always push money, but pulling money was something that was never available in Pakistan, and that's now being piloted. So RAST is going to be very important for you as you transit from cash into digital payments. The introduction of one QR code, where a single QR code at the retail store, at the Kiryana store, will allow acceptance of payments from multiple issuance. So a single QR code is something we never had before. Again, you need to understand what the implication of the single QR code for you. This has been done in our neighboring countries and been highly successful. Estimating retail trade in Pakistan is a difficult thing. Estimates range from 50 billion to 75 billion, depending you want to include wholesale, retail, whatever. But safe argument would be it's north of 50 billion. And e-commerce right now, I'm estimating about 5 billion, so it's a small percentage of what the potential in Pakistan is. But keep in mind that enough studies have shown that physical stores remain relevant. Physical stores are not going to disappear. In fact, if you have a physical store, then the ability to do e-commerce or e-commerce sale expands.
Having just a non-presence or a dark store is possible, but a physical store enhances customer loyalty, enhances footfall, and enhances your e-commerce. So people who talk about, in the world of digitalization, that banks' branches are going to disappear, I'm telling you, there'll be digital banks, but bank branches are not going to disappear. Physical stores will remain. They're not going to be disappear. They're not going to disappear, but how they interact with customer may change and should change, because this whole journey about digitalization is about the customer lens. And unfortunately, regardless of which industry I look at, whether it's banking, insurance, retail, the customer lens is not foremost. We talk about it, but the customer journey remains convoluted. I'm going to talk a bit about how this 2.5, 2.6 million Kiryana stores, which I'm not sure if whether they're part of your organization yet or not, but are people, are places which have interacted in multiple ways with the general population to create economic activity. In my last job, when I was doing Tameer Bank and I launched EasyPaisa with Telenor, we looked at these Kiryana stores and made them branchless banking agents where you could deposit money, withdraw money, pay a utility bill. Suddenly, instead of 15,700 bank branches, you had 80,000 locations where you could do financial transactions. And the owners of these locations didn't go to play golf on Saturday, were available 7 by at least, not 24, 7 by 20. So I'm talking about leveraging networks that exist to enhance your business rather than starting from scratch. Now, if I look at the Kiryana store ecosystem, or the S of the SME who are doing this, they're one of the most neglected systems in the Pakistan ecosystem. As far as lending from commercial banks are concerned, they're less than 6% of total lending of commercial banks, while they create a much larger proportionate of economic activity. So if you want to move these Kiryana stores and some part of the small modern trade from cash to digitalization, you first need to look at the lens of the Kiryana store owner. हम कहते हैं कि Kiryana store को जाके कहें जी आप कैश नहीं लें, आप वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर लें QR कोड पे, या आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर लें, या आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा लें. तो मेरा आपसे सवाल है, किराना स्टोर आपसे पूछता है मैं ये क्यों करूं? जब मैं कैश ले रहा हूं, मेरे हाथ में कैश है, आई एम लिक्विड. अगर मैं आपसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूं तो बैंक मुझे कहता है कि आप 2% MDR दें, मर्चेंट डिस्काउंट फ़ी मुझे दें. वो पैसे मुझे एक दिन बाद मिलते हैं, और वो जाके जब मैं पैसे ATM से निकालता हूं तो मुझे 20 से 15 रुपये मज़ीद फ़ीस देनी पड़ती है, और मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा. These are the concerns of the Kiryana store or the small store owners. Why would they want to shift from cash to digital? And if you don't shift them from cash to digital, then a very large percentage of your economy remains undocumented and we remain a cash society. तो एक तरीका ये है कि आप जब किरियाना स्टोर वाले के पास जाएं या स्मॉल स्टोर वाले के पास जाएं, जब आप पॉस मशीन लगाने की जगह अब आप उनको QR कोड दे सकते हैं. इसका ये मतलब है कि आपको $135 की पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वो कहेगा जी मैं फिर इस पर MDR क्यों दूँ? आप कहें जी मैं MDR नहीं चाहिए, जो आपका डिपॉजिट होगा उससे मैं ट्रांजैक्शन, उससे मैं अपनी फ़ी कमाऊँगा, आपसे मैं कोई चीज़ चार्ज नहीं करूँगा. दिस इज़ हाउ यू गेट अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी. लेकिन उनका जो कंसर्न है, और ये मेरी FBR से 2-3 साल पहले बात हुई थी, कि द फर्स्ट कंसर्न दे गेट इज मैं तो टैक्स नेट में आ जाऊँगा, मुझे टैक्स वाले आगे तंग करेंगे. तो आई हैड एडवोकेटेड छोटे स्टोर को, एंड यू कैन सेट अ लिमिट, उनको आप 5 साल की टैक्स हॉलीडे दे दें फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शन विच आर टेकिंग प्लेस, ताकि उनको ये मसला नहीं हो कि मुझे पहले दिन से मुझे टैक्स नेट में ले लेंगे. एंड वी डिड दिस फॉर EasyPaisa, जहाँ हमारे पास 60,000 ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स थे, और जो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन पे उस पर माइन्यूट टैक्स लगता था और वो देने को तैयार थे. सो यू हैव टू फिक्स द टैक्स कंसर्न बिफोर यू थिंक अबाउट गोइंग फ्रॉम कैश टू डिजिटल.
दूसरी चीज़ सबसे बड़ी नीड स्मॉल स्टोर की क्या है? टॉकिंग अगेन अबाउट किरियाना स्टोर्स बिकॉज देयर आर लार्ज परसेंटेज इस क्रेडिट। उसने पूरे मोहल्ले में लोगों को कर्जा दिया होता है और टिपिकली क्योंकि उसका साइज़ इतना छोटा है कि एफएमसीजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको कर्जा नहीं देते। इफ़ यू आर अ मीडियम साइज स्टोर यू आर प्रॉब्ली गेटिंग मनी फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू द एफएमसीजी, बट फॉर द स्मॉल स्टोर्स यू नॉट। तो ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है कि जो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसके एवज आप फ़ौरन उसको 50% क्रेडिट दे दें, नो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट, सो दैट उसकी नीड पूरी हो जो उसकी क्रेडिट की नीड है। और उससे आपको क्या मिलेगा? आपको डेटा मिलेगा। डेटा मिलेगा तो डेटा की बेसिस पे आप उसको बाद में ये फैसिलिटी 50% से 100% पे ले जाते हैं। फैसिलिटेट द स्मॉल किरियाना स्टोर ओनर एज अपोज टू योर ओन प्रोडक्ट। क्यूआर कोड लगाइए, क्यूआर कोड में एमडीआर नहीं लगाइए, और जो क्यूआर कोड के ट्रांजैक्शन है, अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन है 1 महीने में तो 50,000 का उसको 1 हफ्ते महीने का कर्जा दे दें, वो रिपीट करता जाता है। दैट्स द फर्स्ट पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर मूविंग फ्रॉम कैश टू डिजिटल। ये जो मैंने पेमेंट और क्रेडिट साथ साथ चलेगा। दूसरी चीज़ जो आती है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल, अगेन ये आपके साथ स्मॉलर मॉडर्न स्टोर्स में भी है, मॉडर्न स्टोर में कम है, लेकिन इनके पास खाते हैं रिसीवेबल और पेएबल्स के। एक उसने खाते पे लिखता रहता है कि किस लोगों को मैंने कर्जा दिया और किसको मैंने पेमेंट किया है। There are already 5 companies in Pakistan. One of them, notably Credit Book, has just raised $10 million from Tiger, which is the first time, which is a large investment fund coming to Pakistan for the first time. सिर्फ इन लोगों के खातों को डिजिटाइज करना मुफ्त will lead to transactional data, which will lead to again you providing solutions to this particular entity. That data is valuable for FMCGs. That data is valuable for anybody who's dealing with these small stores. So digitization of their payment and receivables, introduction of QR codes and credit is something that further helps them. ये फर्दर मैंने देखा कि इस लेवल पे कोई इंश्योरेंस या तकाफुल का प्रोडक्ट नहीं है। मैं लाइफ और हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक इनकी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप इनको पे एज यू गो, मतलब कि 5,000 10,000 में आप 5 लाख से 10 लाख का इन्वेंट्री कवर दे सकते हैं इनको। अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कैश इन ट्रांजिट, तो ये सोल्यूशन सेट हमने स्मॉल स्टोर ओनर्स के लिए देखा ही नहीं है। तो अगर ये 4 चीज़ें हम करना शुरू करें, दिस अनडॉक्यूमेंटेड small trade can start becoming part of the association that you have, because they will migrate and they will become larger. इन्हीं स्टोर से अब लोगों ने शुरू कर दिया है नेबरहुड डिलीवरी, because if you look at the story of Alibaba, they went from neighborhood delivery to regional delivery to national delivery to international delivery. और वो किस लिए हुआ? क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स आ गए और डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ नेबरहुड डिलीवरी शुरू होगी, जो आई एम श्योर सायरा विल टॉक मोर अबाउट द यूज़ ऑफ डिलीवरीज। पाकिस्तान में पिछले साल, टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ पीपल आर नाउ व्यूइंग पाकिस्तान, मेरे एस्टिमेट से तकरीबन $400 मिलियन आए इन स्टार्टअप्स, कुछ सीड लेवल पे, कुछ सीरीज ए लेवल पे। This was not limited to Fintech. This included retail, dark stores. In fact, estimate is in 2022 or 23, we will have a dark store which may be worth $1 billion. So I mean, this is something to think about, ke how are e-commerce entities or Fintech or payment entities valued versus traditional brick-and-mortar entities, and how can you enhance your own value? आपकी valuation होगी आपके profit and loss पे, टेक कंपनीज की वैल्यू शिफ्ट होती है उनकी टॉप लाइन पे। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन व्हाई इट वर्क्स दैट वे, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस साल हमें उम्मीद है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक्स, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और उसमें इन्वेस्टमेंट उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी $1 billion। $1 billion, क्योंकि आपके 5 डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं जिनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ इज $25 मिलियन। तो पिछले 6 साल में अगर हमने
120-150 मिलियन रेस किए थे, पिछले साल हमने रेस किए $400 मिलियन, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $1 बिलियन. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू गोना गेट ऑन दिस बैंड वैगन. क्योंकि आप अगर अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहेंगे ब्रिक्स एंड मॉर्टर की, अपनी कस्टमर जर्नी को चेंज नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. यू नीड टू फिगर आउट कि इस प्रोसेस का हिस्सा होने के लिए how are you going to change your business, how are you going to adapt the customer lens. और एक चीज़ जिसकी मैं आखिर में बात करता चलूँ कि big data and AI is going to play a very big role in your business, whether you're an FMCG, whether you're a mall, whether you're modern trade, or even coming down to the Kiryana store. You are sitting on a mine of data, a gold mine of data. And data is not like oil. Oil is a depleting asset. Data is like sunshine. It keeps on expanding and is ever present. तो अपनी बिजनेस का डेटा सेट देखें, चाहे कस्टमर्स का है, चाहे सप्लायर्स का है, चाहे वेंडर्स का है, उसको देखें. और मैं आप यकीन के तौर पर आपको कहता हूँ कि आपकी बिजनेस में एक मटीरियल चेंज आ सकता है. I'm going to end my talk from a verse from Iqbal. And I think that relates to this industry and this country. And Iqbal says, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया. Thank you very much.